अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फोर आर्म की दूसरी टाइप ह्यूमरस। इट इज़ अ लॉन्ग बोन placed obliquely downward and forward between shoulder joint and above the elbow joint. It has a shaft and two extremities, proximal and distal. इसके शाफ्ट की बात करें तो it has twisted appearance and has four surfaces: lateral, medial, caudal and cranial. Cranial की बात करें तो the interior face is the triangular, wide and smooth above, narrow and rough. इसके इंटीरियर व्यू की बात करें तो इसकी इसमें एक ग्रेटर ट्यूबरोसिटी होती है और दूसरी तरफ लेसर ट्यूबरोसिटी, और दरम्यान में एक उभरी हुई जगह होती है जिसे बाइसिपिटल ग्रोव कहते हैं। और इसके मिडिल में एक एक जगह होती है जिसे डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी कहते हैं, और इसके मिडिल में ही इसकी शाफ्ट होती है। और इसके निचले हिस्से की बात करें तो इसमें न्यूट्रिएंट फोरामिन होते हैं और दूसरा रेडियल फोसा होता है। कॉर्डल सल्फर, the posterior face blends with medial and lateral face. It presents the nutrient foramen above the middle. इसके मिडिल की बात करें तो the middle face is nearly straight and its length is just above the middle. Here there's tubercle present for attachment of latissimus dorsi muscle and tears major muscle. इसके लेटरल पार्ट की सरफेस की बात करें तो दी लेटरल फेस इज spirally curved and forming the muscle spiral groove which contain the brachial muscle. The groove is continuous with the posterior face above and wound around the front. Lateral face is separated from the anterior face cranial by a distinct border, the crest of humerus which bears above the middle deltoid tuberosity. The crest is for the insertion of brachiocephalicus muscle and deltoid tuberosity for the insertion of deltoid muscle. There are two extremities, proximal and distal. इसके पोस्टीरियर व्यू की बात करें तो इसकी एक ऊपरी हिस्से पर ग्रेटर ट्यूबरोसिटी होती है, इसका एक हेड होता है और लेसर ट्यूबरोसिटी होती है, इसकी एक नेक भी होती है और दरम्यान में शाफ्ट होती है, और इसके निचले हिस्से में ओलेक्ट्रनियन फोसा होता है। इसमें प्रॉक्सिमल की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ हेड एंड नेक, टू ट्यूबरोसिटी एंड इंटर tubercle or the bicipital groove. Two tuberosity, greater and lesser. The head presents a circular articular surface which articulates with glenoid cavity of scapula to form shoulder joint. The lateral tuberosity consists of two parts on anterior summit इनके पीक पे arching medially, और इसकी posterior convexity की बात करें तो the former overhangs the bicipital groove and give attachment to the lateral tendon of infraspinatus muscle. The convexity give attachment medially to medial tendon of infraspinatus muscle. इसकी medial tuberosity की बात करें तो it is smaller and consists of the anterior and the posterior part, और इसमें distant extremity होती है. It has an oblique surface which is divided by a ridge into two condyles, which medial being larger. The medial condyle is crossed by a groove which extends into the olecranon fossa and articulates with semilunar notch of the ulna. Behind and above the condyles, there are two thick ridges, the epicondyles. The medial epicondyle is more prominent and furnishes to attachment for the flexor muscles. The
Literal epicondyles bears literally condylite roost in the form of raised carpi radialis muscle receive the between these two epicondyles is deep olecranon fossa which receive the anconian process of the ulna. Comparative anatomy of dog and horse in humerus bone. इसमें हॉर्स की बात करें तो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी इज मोर प्रोमिनेंट एज कंपेयर टू ऑक्स. इसमें डॉग की बात करें तो दी मस्कुलो स्पाइरल ग्रूव इज shallow. Deltoid tuberosity is present in the form of ridge, small. The coronoid and olecranon fossa communicate with each other by supratrochlear foramen through which no structure pass. इसके हॉर्स में आते हैं तो bicipital groove is divided by intermediate ridge bifid.